ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन पढ़ी थी, है ना। वेक्टर स्पेस क्या होता है कि नॉन एम्प्टी सेट वी, एक हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, दिस इज वी विच इज अ नॉन एम्प्टी सेट, एंड देयर इज अ फील्ड एफ, है ना। तो इस वेक्टर वी को हम वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर द फील्ड एफ इफ देयर इज टू ऑपरेशंस इज डिफाइंड, है ना। वन इज एडिशन, एडिशन इज डिफाइंड, एंड दैट इज द इंटरनल ऑपरेशन, इंटरनल ऑपरेशन इन द सेंस कि दिस इज वी क्रॉस वी टू वी, if I'm just taking two operation two elements, दैट इज, तो ये इसको हम इंटरनल कंपोजिशन बोलते हैं। और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, दैट इज लाइक दिस इज वी क्रॉस एफ टू एफ टू वी, है ना। कि अगर हम कोई एलिमेंट वी का लें और एफ का एलिमेंट लें और दोनों के अंदर हम ये ऑपरेशन लगाएं तो वी विल गेट एन एलिमेंट ऑफ वी, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपोजिशन, है ना। तो फिर हमने देखा था कि दिस इज, we have this property, this is v with together with two operations addition and scalar multiplication, है ना। these two composition is here, है ना, is a vector space, है ना। अगर ये दो तीन प्रॉपर्टीज फॉर पास्टुलेट्स को एग्जिस्ट करे, जैसे कि पहले हमारे पास ये है कि फर्स्ट अगर हम बात करें तो वी कैन से v with addition is an abelian group, अबेलियन ग्रुप। और अबेलियन ग्रुप के हमारे पास 5 एक्सियम्स होते हैं, उनको ये सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा ये है, थर्ड सेकेंड वी कैन से कि हमारे पास जो वी है दैट इज क्लोज्ड अंडर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज हो, या यू कैन से लाइक दिस कि दिस इज ए इज एन स्केलर एंड यू इज बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। फॉर ऑल a from f and u from कैपिटल B, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज समझना कि B के जो एलिमेंट है इनको हम वेक्टर बोलते हैं, और जो हमारे पास F के एलिमेंट्स है इनको हम स्केलर बोलते हैं। तो कभी भी अगर स्केलर की बात हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड, है ना। और V जो होता है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस होता है। और ये थर्ड नंबर पे हमारी जो प्रॉपर्टीज है, दिस फोर मोर प्रॉपर्टीज दैट इज बेस्ड ऑन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे कि ए यू प्लस वी इज जस्ट इक्वल टू ए यू प्लस का ए इंटू वी, अनदर फॉर ऑल वी कैन से फॉर ऑल ए फ्रॉम एफ एंड यू एंड वी फ्रॉम वी, and second one, if you are taking two scalars a plus b into u is just equal to a u plus का b into u, and similarly if you are the scalar multiplied like this, you can just say a times b into u, and so on. And if you are taking one is the identity element of field, है ना, multiplicative identity element of the field, and then you multiply with u, you will get u for all u from v, clear। तो these four properties also is there। तो अगर ये प्रॉपर्टीज 5, ये प्रॉपर्टीज 1, ये और फिर हमारे पास 4, ये 10 प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करती हैं तो उसको हम बोलते हैं दैट इज अ वेक्टर स्पेस, है ना। तो वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द एफ। तो ये डेफिनेशन हमारी क्लियर है। हम और लास्ट क्लास में और भी प्रॉपर्टीज हमने कुछ देखी थी। आज हम कुछ नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स
इनमें हम देखेंगे कौन सा वेक्टर स्पेस होता है कौन सा नहीं, है ना। बहुत सारे हम आज एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो पहले हम नंबर सिस्टम के एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल, पहला हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में तुम्हारे पास जो इंटीजर्स है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। तो फील्ड एज ए इंटीजर लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो हमारे पास बनाता है वेक्टर स्पेस या नहीं। तो पहला हम बात करेंगे दैट इज योर हेयर, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर ओवर सेट ऑफ इंटीजर। एक रिप्रेजेंटेशन हमने बताया था कि अगर वेक्टर स्पेस लिखना है तो वी ओवर एफ ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर फील्ड हम मतलब फील्ड की जगह पर हमने जेड लिया। I'm asking one question, is it Z is a field? क्या Z फील्ड है? नो सर। नो। तो इट मीन्स कि कभी भी कोई भी सेट क्यों ना हो, ठीक है, वो Z के ओवर जो है वेक्टर स्पेस नहीं बना सकता, है ना। तो दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। Similarly, if you are just taking Q over Z, it is not, also not a vector space. Similarly, if you are taking R over Z, it is also not a vector space. And if you are just taking T over Z, it is also not a vector space because Z is not a field. So over Z we can't define any vector space because we need a field if you are going to define as a scalars. Okay. Next we talk about Q. आप बताइए क्या Q field है? HQ is a field. यस सर। Q is a field. Yeah. ओके। सो फील्ड की डिफिनीशन क्या होती है कि भाई अगर हमारे पास दो ऑपरेशंस डिफाइंड होते हैं, एक एडिशन और री एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है, तो इसके साथ एक अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए, दिस इज अबेलियन ग्रुप इसके साथ होना चाहिए। साथ में ये मल्टीप्लिकेशन के साथ भी अबेलियन ग्रुप बने। अ, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती है वो होल्ड करे, है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन के साथ एक्चुअली इसमें से जीरो हटा देते हैं हम लोग, स्टार करते हैं यहाँ पर, है ना। मतलब जीरो के अलावा सारे नॉन जीरो एलिमेंट के इन्वर्सेस एग्जिस्ट करने चाहिए, है ना। कम्यूट करना चाहिए, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो दिस क्यू इज अ फील्ड। अच्छा, क्यू इज अ फील्ड। क्या जेड, अगर हमने मान लो फील्ड लिया और फील्ड क्यू ले लिया, ठीक है, ओके। क्या जेड जो है ओवर क्यू वेक्टर स्पेस बनेगा? बताइए। नो सर। क्यों नहीं बनेगा? अल्फा डॉट वी की हाँ, कंडीशन से नहीं। क्यू हैव मोर एलिमेंट देन जेड फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये कि हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ना कि भाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, वो हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर हमने यहाँ से जेड से चूज कर लिया, वन एलिमेंट इज देयर, एंड हमने क्यू का एलिमेंट लिया और मान लो 1/2, है ना। और क्लियरली ऑर्डरली मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यू नो दैट कि दिस आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस, एंड अगर हम यहाँ पर 1 into 1/2 करते हैं तो यू विल गेट 1/2, एंड दैट इज बिलोंगिंग टू क्यू। या यू कैन से दिस एलिमेंट शुड बी बिलोंग्स टू जेड बट इट विल नॉट बिलोंग्स टू जेड, है ना। तो इसका मतलब है जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो क्लोजनेस है वो हमारे पास नहीं रहेगी। इट मीन दैट कि दिस फील्ड शुड बी इक्वल टू द सेट और लेसर देन सेट। मतलब उससे बड़ा अगर हो गया, एक भी एलिमेंट आ गया, तो बिकॉज वी हैव आइडेंटिटी हियर दैट मल्टीप्लाई टू दिस एंड विल गेट द सेम एलिमेंट फ्रॉम हियर। ओके।
So it means this is not a field. Next, we talk about Q over Q. Is it a vector space? तो ये वेक्टर Yes, sir. स्पेस है. Yes, because Q over Q ले रहे हैं और Q is a field, or if you're multiplying, subtracting, whatever we do in a Q, because Q is always a closed with the addition and multiplication, you can say scalar multiplication here. So ये हमारे पास field बनेगा. Similarly, we can see कि this will be R over Q will be a field, and this is your C over Q is also a field. Sorry, vector space, or this is also vector space, and this is also a vector. Okay. Next we can just see कि हमारे पास जो Z obvious सी बात है नहीं बनेगा, तो ये तो हमारे पास गलत. फिर हमारे पास अगर हम बात करते हैं Q over C over R, तो Q over R भी नहीं बनेगा क्योंकि R is more than Q, so it will be not. And obviously R is a field, C is a field, Q is a field, है ना. तो ये वेक्टर स्पेस छोटे सेट के ऊपर नहीं बनेंगे, इट शुड बी इक्वल और मोर. तो यू कैन जस्ट से कि हमारे पास वेक्टर स्पेस की अगर हम बात करें, दिस इज योर R ओवर R, है ना. तो ये तुम्हारे पास वेक्टर स्पेस है. नेक्स्ट C ओवर R, बताइए होगा कि नहीं होगा. Yes, sir. Yes, it is a vector space. Similarly, let's some more. So this is all about number system. Z over C, obviously not. Similarly, Q over C, obviously will be नहीं, है ना. X over B, and this is R. This is also not. But it will be C over C will be a vector space. Okay. तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जरूरी है कि जो भी हम ले रहे हैं नंबर सिस्टम, दैट शुड बी फील्ड इफ यू आर प्लेसिंग दैट सेट इन द प्लेस ऑफ फील्ड, है ना. और उसके बाद हमें उस जो वेक्टर स्पेस है उसकी प्रॉपर्टीज को देख लेंगे. तो अब हम ये समझ में आ गया. अब एन टपल को देखते हैं वेक्टर स्पेस के बारे में. तो जो सेकंड हमारे पास रहेगा एग्जाम्पल्स में, वो हमारे पास रहेगा एन टपल्स. एन टपल्स का मतलब जैसे R2 ओवर R, R3 ओवर R, R3 ओवर C, R3 ओवर Q, ये सारी चीजों के बारे में लिख लेते हैं. तो कुछ हम लिखेंगे जो कि वेक्टर स्पेसेस हैं. तो आपके 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 दिमाग में चीजें कुछ सेट हो जाए कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेसेस होते हैं. जैसे कि नंबर 1, सी एन, यू एन टपल, यू नो दैट. सी एन के बारे में आप सबको पता ही है कि दिस इज द टाइप ऑफ एलिमेंट Z1, Z2 अप टू Zn, है ना. तो ऑल द Zi इज फ्रॉम, ये तो टपल ऐसे ही डिफाइन होता है ना टपल. तो दिस इज सी एन ओवर सी. दिस इज अ वेक्टर स्पेस, दिस इज ऑल अ वेक्टर स्पेस, and then this is Cn over R. This is also a vector space. Similarly, this is Cn over Q. This is also vector space. These all are the vector space. We are writing only the vector spaces. This is your Cn, sorry, Rn over R, and fifth, this is your Rn over Q, and this is your Qn over. हमेशा ध्यान रखना, कोई फील्ड है और फील्ड n over f is always a vector space.
वेक्टर स्पेस। ओके ना? तो दीज आर 6 वेक्टर स्पेसेस। अब हम एक नोटेशन डिफाइन करते हैं ऑन मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस के कलेक्शन को भी हम देखते हैं कि वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं। हमारे एग्जांपल थोड़ा एडवांस लेवल के एग्जांपल्स आने लगे। तो एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, तो नोटेशन एक डिफाइन करते हैं। नोटेशन हम डिफाइन करते हैं एम, एम कमा एन ओवर एफ। We are taking elements of the matrix from F, a field F, and this M is the collection of matrices of order M by N. So I'm just taking the collection of all the matrices of order Aij of order M by N, and such that this is Aij is from capital F. So this is your set of, this is set of all, set of all M by N matrices, matrix whose entries are from clear. So set of all M by N matrices whose entries are from F, जिसकी एंट्रीज कहाँ से हैं? F से। क्लियर? सो लेट अस सी अबाउट द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के वेक्टर स्पेसेस के बारे में बात करते हैं। कौन वेक्टर स्पेस होता है, कौन सा नहीं होता, इस टाइप के कलेक्शन। तो यहाँ पर F जो है वो फील्ड है, तो यहाँ पर जब फीड करेंगे तो एक पूरा सेट बनेगा। दिस इज विल टेक V, लाइक अ V, है ना? और ये V किसके ओवर हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाएगा? तो लेट अस सी। मैट्रिसेस याद रहेगा कि मैट्रिसेस के वेक्टर स्पेसेस है ना। तो नंबर 1 वी आर राइटिंग हियर Mn सी फील्ड। अब ये पूरा एक वेक्टर स्पेस V हो गया, और ओवर हमने इसको ले लिया ओवर C, है ना? तो यहाँ पर हमने जो फील्ड चुना दैट इज योर C, और ये कलेक्शन ऑफ ऑल द मैट्रिक्स है ना, ऑफ द सच टाइप। तो एडिशन, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू फाइंड। तो दिस इज अ वेक्टर स्पेस। Second one, if you are taking Mn सेम सेम हमने V लिया ओवर R, ठीक है? तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होता है। दैट इज इक्वल्स टू M कमा N ओवर C ओवर Q, है ना? तो दिस इज Q हमारे पास है, तो यहाँ पर ये भी वेक्टर स्पेस। सिमिलरली we talk about the Mn, M कमा N ओवर R। दिस इज ओवर R ही रख सकते हैं, R से ऊपर C के ओवर नहीं रख सकते। तो दिस इज आल्सो वेक्टर स्पेस। बड़ा नहीं रखना है ना, इससे जो हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू Mn Mn और R ओवर R, ठीक है? तो ये भी हमारे पास ओवर R तो हो गया ना, ओवर R भी कैन हैव फिटेड। यहाँ Q लिख दीजिए, ओवर Q। ओवर Q भी ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। फिर तुम्हारे पास आता है Mn ओवर Q।
ठीक है, तो दिस इज द वेक्टर स्पेस, है ना। तो दीज आर मैट्रिसेस के वेक्टर स्पेसेस है ना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये फील्ड्स को हम चुन रहे हैं, और ये हमारे पास ऑलरेडी जो मैट्रिक्स लिखी हुई है उसके अंदर क्या फील्ड है, मतलब उसमें हम जो इंट्रीज कर रहे हैं वो कहाँ से हम ले रहे हैं, है ना, दैट इज द कलेक्शन। ओके, नेक्स्ट वी डिफाइंड अ पॉलिनोमियल। एक नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन, कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास कब वेक्टर स्पेस बनाता है, तो उसकी बात जरा हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर नोटेशन लिखिए, हम डिफाइन करेंगे पी एन एफ, पी एन एफ। So we taking coefficient from f and the polynomials collection of all the polynomials of degree n degree के सारे polynomials का collection. So we just taking this is here, this is a naught plus का a1x plus का a2x and so on plus a n x की power n, है ना, and this ai is from f, and n is a fixed non-negative integer. Fixed non-negative integer. So this is a naught plus a1x of dot 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 a n x for n, such that ai is belonging to f and n is a fixed non-negative integer. ठीक है, so you can say कि this is a set of all polynomials of degree at most n, है ना, maximum degree उसकी n है, n डिग्री के जितनी पॉलिनोमियल हैं, जैसे 1 2 3 पर सारे डिग्री के रहेंगे और साथ में n डिग्री के रहेंगे, अप टू एन डिग्री सारे पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन तुम्हारे पास पी एन एफ डिफाइंड होता है। ठीक है, तो यू कैन जस्ट राइट हियर द सेट ऑफ, दिस इज सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स set of all polynomials of degree at most n with with coefficients from f and the zero polynomial, जीरो पॉलिनोमियल भी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। ओके, सो दिस इज पी एन एफ डिफाइंड लाइक दिस। तो आइए जरा इन पॉलिनोमियल्स की बात कर लेते हैं कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स वेक्टर स्पेस बनाता है और किसके ओर बनाते हैं, उन सारे वेक्टर स्पेसेस की बात करेंगे। तो फोर्थ एग्जांपल्स, ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n, clear? So we are talking about the vector spaces. तो पहला हम जो लेते हैं दैट इज ऑफ पी एन सी ओवर सी, it will be a vector space. So this is p n c over c. So this is a vector space. Secondly, p n c over r. This is a vector space.
is your P and C over Q, है ना? This is the also vector space. This is the P and R over R, है ना? So obviously, but this is the vector space, and this is P and R. P and R. You just write and learn the things over Q. This is a vector space. इनको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इनको कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाते हैं या फिर नहीं। पी एन ओवर क्यू, दिस इज द वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो दीज आर सिक्स वेक्टर स्पेसेस दैट बेस्ड ऑन द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन। ओके, अब हम ऑल डिग्री के पॉलिनोमियल्स का अगर कलेक्शन लेते हैं, जैसे कि ऑल पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन लेते हैं, तो उसको नोटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पर वो सारे पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है जिनकी डिग्री एट मोस्ट एन है, मतलब मैक्सिमम एन हो सकती है। बट हम अगर सारे ले लेते हैं, उनकी डिग्री कुछ भी हो, उन सारे पॉलिनोमियल का अगर कलेक्शन लेते हैं तो उसका नोटेशन कैसे डिफाइन करते हैं? लेट अस डिफाइन। ओके, सो वी आर डिफाइनिंग पी एफ। अब यहाँ पर डिग्री मेंशन नहीं है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिग्री, वी आर टेकिंग ऑल द पॉलिनोमियल्स। so we this have the polynomials. This is a naught plus a1x plus the a2x square and up to this is your anx x for n such that this is your ai is from f and this n is now any non-negative integer। वहां पर n को फिक्स कर दिया था हमने, यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है ना? n is any non-negative integer। Okay, so this is set of all polynomials, set of all polynomials with coefficient from f। Clear? So this is the collection of all the polynomials, whatever the degree, doesn't matter। तो यहाँ पर इसका भी हम अगर बात करें, इसकी भी हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाता है। So in the fifth we are taking all the polynomials concept। all polynomial, so we are just going to vector spaces। So first, same you can just apply. If I'm taking over C, this will be over C will form a vector space. Next, we can just say PC over R is a vector space. Third one, that is equals to PC over Q. This is a vector space. This is 4. This is PC, PR over R, the vector space. This is P over R over Q, sorry, R तो है, this is vector space and we are just taking PQ over the vector space. Okay, so we have completed। Now I'm going to discuss about some functions। ये वो हमारे पास फंक्शंस की अगर हम बात करें तो वो भी हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाता है। तो लेट अस सी कि कैसे डिफाइन है।
एक फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस एंड ऑल। तो फंक्शंस के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो the set V of all the continuous functions is also a vector space. So you can just write here the set V of all real value continuous functions functions of x defined on interval defined on interval 0 1 है ना, एक इंटरवल 0, 1 is a vector space over the field R of real numbers with respect to vector addition and scalar multiplication of function. Multiplication अब डिफाइन कैसे है फंक्शंस का सम एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, लेट अस सी डिफाइंड बाय। तो हमने जो सम डिफाइन करा या एडिशन डिफाइन करा, f1 + f2 ऑफ x इज जस्ट इक्वल टू f1x प्लस का f2x, है ना, फॉर ऑल f1 एंड f2 फ्रॉम द v। सिमिलरली if on the scalar multiplication की बात करते हैं, तो I'm just taking a of f1 and that is operated on x, that is equals to a times f1 of x, है ना, for all a belonging to set of real numbers and f1 is from V। तो ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, वेक्टर एडिशन डिफाइन है, और इन दोनों ऑपरेशंस together with these two operations, this V, which is the set of all real valued continuous functions of x defined on the interval 0, 1 will form a vector space over R, है ना, it will be form a vector space over R। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ फाइनाइट सेट्स हैं, फाइनाइट वेक्टर स्पेसेस हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ओवर लेट अस सी, तो वी कैन जस्ट नाम देते हैं इनको फाइनाइट वेक्टर स्पेसेस, है ना। तो एडिशन मॉडुलो जो हम चलाते हैं, है ना, तो वी कैन जस्ट से हियर जेड पी एन ओवर जेड पी, तो जेड पी है उसके होल और एंगल, तो ओवर पी वी कैन आल्सो फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास वी कैन जस्ट से एम एन पी। अब यहाँ पर हमने फाइनाइट एलिमेंट्स लिए हैं, तो एम एन एम कमा एन, ये जो हमारे पास जेड पी हमने इसमें जो एलिमेंट्स लिखे हैं, ये भी हमारे पास एक फाइनाइट कलेक्शन होगा एंड दैट विल बी ओवर जेड पी विल फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। क्लियर। एंड नेक्स्ट तुम्हारे पास है दैट इज इक्वल टू पी एन ओवर जेड पी। यहाँ पर भी हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, क्योंकि यू हैव द फाइनाइट फील्ड ओवर द फील्ड, है ना। तो दिस फॉर्म आल्सो
वेक्टर स्पेस, है ना। एंड यू नो दैट कि जो जेड पी शुड बी फील्ड, है ना, तो ये हमारे पास सारे के सारे फील्ड हो रहे थे, तो दिस जेड पी एंड, तो एम एन, ये हमारे पास तो फाइनाइट वेक्टर स्पेसेस कहलाते हैं, बिकॉज वी हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो आई होप कि हमारे पास ये कुछ स्पेशल, कुछ बेसिक फंडामेंटल हमारे पास वेक्टर स्पेसेस हैं जिनके बारे में पता ही होना चाहिए। बाकी और भी हमारे पास एक्सरसाइजेस के अंदर हम एज ए क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि वो हमारे पास अगर कोई ऑपरेशन डिफरेंट तरीके से डिफाइंड है या कि कलेक्शन कुछ दूसरा हमारा लिया गया है, तो वो हमारे पास वेक्टर जो स्पेस की प्रॉपर्टीज हैं, जो एक्सियम्स हैं, जो पॉस्टुलेट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये हमें चेक करना होगा। और देन वी कैन से कि दिस इज फॉर्म ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड और नॉट। ओके, तो आई होप कि ये चीजें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी तो मीटिंग हमारी ओवर हो रही है ना, टाइम आउट हो रहा है, तो आफ्टर 10 मिनट्स ज्वाइन अनदर मीटिंग। ओके, आवाज आ रही है हमारी?